Hi guys, I hope you're doing amazing. So today we are going to talk about writing task 2, and in writing task 2 exactly what we are going to talk about is कि आप अपना स्कोर 5.5 से 6 तक कैसे ले जा सकते हैं। अब ये वीडियो आपके लिए नहीं है अगर आप टारगेट कर रहे हो 4 से 7 तक जाना या 6 से 8 तक जाना, उसके लिए आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर स्मॉल थिंग्स कि वो क्या छोटी छोटी चीजें हैं जो आप फिक्स कर सकते हो अपने राइटिंग में ताकि आप एटलीस्ट 0.5 बैंड स्कोर अपना इंक्रीज कर सको। सो लेट्स हैव अ लुक एट इट, starting with the sample that I've taken from Cambridge Guide. It says governments should spend money on railways rather than roads. To what extent do you agree or disagree with this statement? So मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे अग्री और डिसअग्री करना है विद दिस स्टेटमेंट और उसके एग्जाम्पल भी देने हैं या रेफर भी करना है व्हाई एम आई सेइंग सो। So I'm going to show you a sample written by somebody, and in this sample आप लोग देख सकते हो क्या क्या चीजें हैं जो उस बच्चे ने लिखी हैं और क्या क्या इसमें मिस्टेक्स हैं। अब कुछ मिस्टेक्स हैं जो आप अपने साइड से भी फाइंड आउट कर सकते हो, कुछ मिस्टेक्स हैं जिसके बारे में हम भी बात करेंगे। बट बिफोर वी गो फॉर एनीथिंग एल्स, आप 1 मिनट वीडियो को पॉज करके इस टेक्स्ट को पढ़ो एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट। सो लेट्स पॉज इट फॉर अ मिनट। Now I hope you have read the text completely. आपको कुछ चीजें मिली होंगी जो आपको लगा होगा कि इम्प्रूव हो सकती हैं। अब ऐसी कुछ चीजें हम भी देखेंगे कि क्या क्या चीजें इम्प्रूव हो सकती हैं इसमें। So let's look at the spelling mistakes first. अब आप जहां भी देख रहे हो quality, transportation, so these are very small spelling mistakes, but इससे आपका बैंड स्कोर बहुत इम्पैक्ट करता है। One thing that you should be careful of is कि जब आप अपना टेक्स्ट लिख लो उसके बाद आप उसको प्रूफ रीड जरूर करो। It's very important for you to proofread it because some of the mistakes just happen in rush and you can avoid them अगर आप particularly एकदम अच्छे से proofread करो उसके at the end of your text. And then after that, even if proofreading doesn't sort it out, then the spelling mistakes that you're making while practicing, focus on them. जब आप अपना टेक्स्ट चेक करवाते हो उसमें आप क्या क्या स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हो उसको प्लीज चेक करो ध्यान से और उस पर काम करो। सो फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल बेनिफिट्स, ई आना था आई की जगह। एनवायरमेंट, एन मिसिंग है। द वर्ड सेज एनवायरमेंट, इट सेज एनवायरमेंट समथिंग। So please make sure these very basic spellings are surely corrected and practiced well. Let's look at the next mistake. If you look at the green highlighted part, government focus, reduced, solved, caused. So these are the tenses mistakes. तो जो बच्चे ने writing text में अपना लिखा है tenses से related, बच्चा बोलना चाह रहा है कि ऐसा generally होता है, but then the child has used past tense. So for example, secondly, it solved congestion. This caused traffic jam. People could save money. People generally save money. People can save money. Or it solves congestion. This causes traffic jam. You have to be very careful आप कौन सा tense use करते हो। अगर आप गलत tense use करोगे तो आपका टेक्स्ट इम्पैक्ट करेगा और आपका बैंड स्कोर डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। सो प्लीज मेक श्योर जो आप टेंस यूज कर रहे हो अपने टेक्स्ट में वो पर्टिकुलरली वही टेंस हो जिसके बारे में आप बात करना चाह रहे हैं। नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड मिस्टेक। सो सिंगुलर प्लूरल, फॉर एग्जाम्पल कार ब्रिंग अ पोल्यूशन, ओवरऑल गवर्नमेंट पे मोर मनी। सो मेक श्योर यू नो कि सिंगुलर के साथ आप क्या यूज करते हो, प्लूरल के साथ आप क्या यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप अ पोल्यूशन कभी नहीं बोलोगे, पोल्यूशन कैन नॉट बी काउंटेड, सो यू विल नॉट से अ पोल्यूशन। फॉर on the other hand, government pays because government is considered as one entity, single entity, so that's why you'll just say government pays. That's why you have to be very careful of even the singular plural mistakes you're making, although
बहुत सिंपल साउंड करता है कि हाँ मुझे पता है कि वन के साथ क्या लगेगा या मोर देन वन है तो क्या यूज होगा, बट जब हम राइटिंग में इसको यूज करते हैं सो कितना एप्लीकेशन में वो आ पाता है, उस पे आपको जरूर फोकस करना पड़ेगा. नाउ अंडरस्टैंड दिस इज जस्ट वन ऑफ द सैम्पल्स. These can be the mistakes that might be you're also making. If you want your sample to get checked, you can reach out to us and I'll share where you can do that. So particularly in this sample, we focused on spellings, tenses, singular plural. And there can be multiple other mistakes which I'm not highlighting right now because my target is just to increase point 0.5 right now. तो 0.5 अगर आप ये मिस्टेक्स भी सॉर्ट आउट कर देते हो अपने टेक्स्ट पे, कैन बी इजिली इंक्रीज्ड. सो दीज आर वेरी स्मॉल मिस्टेक्स बट दे कैन लीड टू अ हायर बैंड स्कोर. So if you want to get your writing task checked or you want your feedback, you can just write an email to us or you can send a sample of your writing task too. You can send it directly on WhatsApp number also and we will provide you individual feedback. क्या आपका individual feedback है writing task 2 के लिए, कैसे आप improve कर सकते हो, हम लोग वो भी आपको support provide करेंगे, which will be completely free of cost. Don't worry about that. But please make sure that you're not making these small mistakes which leads to lower band score. Thank you everyone. Keep looking at other videos as well wherein you find completely relevant content and reach out to us in case you require any support. Thanks a lot.